Okay, good morning, students. Today our topic is FHSS, Frequency Hooping Spread Spectrum. सबसे पहले जितने स्टूडेंट्स हैं एक बार जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए. Then we will start our lecture. चलिए ठीक. Okay, today's topic is FHSS, Frequency Hooping Spread Spectrum. We already discussed spread spectrum in our previous lecture. There are the two type of spread spectrum. First one is DSSS, DSSS, that is direct sequence spread spectrum, and the second one is frequency hooping spread spectrum. Clear है यहाँ तक सभी को? In DSSS, we used digital signal for the transmission. Clear बात यहाँ तक सभी को? We used digital signal for the transmission. ठीक. And in DSSS, that we already discussed in our previous lecture, in DSSS, the modulator that we used is BPSK, that is phase shift keying. In BPSK, in DSSS, BPSK modulation is performed for the transmission of DSSS signal in a large distance. ठीक बात यहाँ तक सबको समझ में आई. But in FHSS, that is frequency hooped spread spectrum, when we need to modulate this FHSS signal, so at that time, instead of using BPSK, we will use FSSK, or we can say BFSK, that is frequency shift keying. ठीक. In DSSS, we can use BPSK signal for the modulation, that is phase shift keying, and in FHSS, we used FSK signal for the modulation purpose. Clear? The second thing is that in DSSS, the input signal in the form of bits, in the form of digital signal. But when we are considering the frequency hooped spread spectrum, at that time the input signal is in the form of analogous signal. Analogous signal, that means it is in the form of continuous signal. Clear बात यहाँ तक सभी को? Here the analogous signal is in the form of continuous signal, and its bandwidth is represented by capital B. Its bandwidth is represented by capital B, and this one is its frequency. Clear यहाँ तक सभी को? ठीक. Okay. Now this one is the mixer circuit. Now the question rises that why we use FHSS if DSSS is available? So in previous lecture we discussed that there is one limitation of DSSS. What is the limitation of DSSS? DSSS has a limitation that in DSSS we can't exceed the bandwidth. We can't exceed the bandwidth in a certain limit. We can't exceed the bandwidth in certain limit, है ना? जो भी हमारी bandwidth हम उसको एक certain limit के पार हम नहीं कर सकते. ठीक. तो जो spread spectrum होता है, spread spectrum का यूज ही मेन इसीलिए किया जाता है कि जो भी हमारा इनपुट मैसेज सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ को हमें इंक्रीज करना है. बट इन DSSS वी कांट एक्सीड द बैंडविड्थ इन सर्टेन लिमिट, है ना? एक सर्टेन लिमिट के बाद हम लोग उस बैंडविड्थ को एक्सीड नहीं कर सकते. सो दिस वन इज द डिसएडवांटेज, दिस वन इज द लिमिटेशन ऑफ DSSS. ओके, सो दिस लिमिटेशन इज अवॉइडेड बाय using this method, that is frequency hooped spread spectrum or frequency hooping spread spectrum. There are the two type of frequency hooping spread spectrum. One is known as fast hooping spread spectrum, and the second one is known as slow hooping spread spectrum. ठीक, फिर से मैं रिपीट करूंगा. In frequency hooping spread spectrum, there are the two different types. First one is known as slow hooping spread spectrum, and the second one is known as fast hooping spread spectrum. Clear? First, we will see the generalized block diagram of frequency hooping spread spectrum, or we can say to generate frequency hooped spread spectrum signal, we will use this type of block diagram. Okay, so this one is the block diagram. Here, this circle represents a mixer, and the spreading factor of this mixer is L, capital L. And this one is the input signal. Input signal is in the form of analogous, and this one is the output signal, or we can say this one is the transmitted signal, spread rate signal, we can say. So this one is the narrow band signal, and this one is the wide band signal. How we can convert this narrow band signal into wide band signal?
To convert this narrow band signal into wide band signal, we will use this frequency synthesizer. So after multiplication of narrow band signal with the wide band frequency signal, we will get the output as wide band signal. Okay, so this one is the transmitted signal. Here the output frequency is output bandwidth is D triple S, input bandwidth is B. So we can say spreading factor is BSS divided by B. BSS divided by B. जितना हमारा स्प्रेडिंग फैक्टर होगा, जितना हमारा ज्यादा से ज्यादा स्प्रेडिंग फैक्टर होगा, इतनी ज्यादा से ज्यादा हमें बीएस मिलेगी. So कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि BSS equals to L multiplied by B. इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी मैं L को एक्सीड करूंगा उतना मेरा BSS की वैल्यू एक्सीड होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी. क्लियर बात यहां तक सभी को? अब यहां पे देखिए, this one is the block, ये हमारे लिए नया है. This one is the block known as frequency synthesizer. This one is the block known as frequency synthesizer. Known as frequency synthesizer. It is used for the selection of frequency. Why it is used? Frequency synthesizer is a block that is used to select the frequency. क्लियर बात. अब ये जो हमारी बात आ रही है कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन की, तो यहाँ ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन कहां से करेगा? टू सिलेक्ट द फ्रीक्वेंसी, to select the frequency we will use this frequency synthesizer, but to make different frequency we will use this PN sequence generator circuit. कैसे वर्क होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा. We already discussed PN sequence generator. What is PN sequence generator? क्या काम होता है PN sequence generator का? The main work of PN sequence generator is to generate various random signals. Clear बात? Why we generate this random signal? We generate this random signal to provide immunity to other unauthorized users. Unauthorized users से अपने सिग्नल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ रैंडम सिग्नल्स का यूज करते हैं. And that signal is generated by this PN sequence generator. Okay, so the main work of PN sequence generator is to generate a random code. Suppose a PN sequence generator is of 3 bit. We already discussed various diagram of PN sequence generator. Okay, suppose this one is the diagram of PN sequence generator. Here we use 3 different resistors. That's why the output frequency, the output code will be of 3 bits, है ना? जो भी हमारा आउटपुट कोड होगा वो भी हमारा 3 बिट का होगा. क्लियर बात? अगर मैं यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा, so at that time we will get the output is of 4 bits. Clear है यहाँ तक सभी को? So instead of using 4 flip flops, we are using 3 flip flops here, and because of this 3 flip flop, this PN sequence generator generates the output of 3 bits. So this one is the output of PN sequence generator. This one is the output of PN sequence generator. Clear बात है यहाँ तक सभी को? So if there are if the PN sequence generator generates the combination of 3 bits, so because of this we will get how many different combinations? How many different combinations we will get if the PN sequence generator is of 3 bit? If the PN sequence generator is of 3 bit, so how many different combinations we will get? We will get 2 raised to power n different combination. It means that if there are n number of flip-flops connected with each other, so at that time we will get 2 raised to power 3, that is 8 different combination. We will get 8 different combination. So here are 8 different combination that we will get by using this PN sequence generator. क्लियर बात है तक सभी को? इसका ऑर्डर कुछ भी रैंडम हो सकता है. इट कैन बी रैंडम. इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. सिर्फ यहाँ पे टेबल रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसको सीक्वेंशियल अरेंज किया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जो पीएन सीक्वेंस जनरेटर है इसी ऑर्डर में हमारा सीक्वेंस जनरेट करे. ये रैंडम सीक्वेंस जनरेट करेगा. बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ 0001 के बाद ये आ सकता है, इसके बाद ये आ सकता है, इसके बाद ये आ सकता है, इसके बाद ये आ सकता है. क्लियर बात? द जनरेशन सीक्वेंस कैन बी रैंडम, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया सीक्वेंशियली. क्लियर बात यहां तक सभी को? Now each different code, now each different combination generate different frequency. Now each different combination represent different frequency. It means that if the PN sequence generator generates 000, it means that 000 representation of frequency f1.
If the in sequence generator generates the combination 001, it means that it generates F2 frequency. It selects F2 frequency, but it generates F2 frequency, and this F2 frequency is selected by this frequency synthesizer. Now what is the use of this frequency synthesizer? Frequency synthesizer is used to select one frequency out of them, है ना? इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज में से एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने का काम हमारा होगा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Frequency synthesizer is used to select one frequency out of them, है ना? इतनी सारी फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करने का काम हमारा होगा फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का. Is it clear to all of you? ठीक. So suppose at starting the frequency synthesizer selects frequency 110. It means that select frequency F7. It means that it provides frequency F7 to this mixer. Clear bar? It provides frequency F7 to this mixer. It means that now the signal that is provided to the mixer is shifted to the frequency F7. After a certain time, if the PN sequence generator generate code 011, it means that 011 represent F4 frequency. It means that the frequency synthesizer select F4 frequency after a certain time interval. ओके इसका मतलब ये हो रहा है बेटा कि जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कंटिन्यूअस वेरी होते जा रही है, हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वेरी होते जा रही है. ठीक. इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में अगर उसके पास ये F1 फ्रीक्वेंसी यहां से आ रही है तो हो सकता है अगले सेकंड में F3 फ्रीक्वेंसी यहां से आए, हो सकता है अगले सेकंड में F5 फ्रीक्वेंसी आए, हो सकता है अगले सेकंड में F9 फ्रीक्वेंसी आए. तो क्या होगा, जो भी हमारा इनपुट सिग्नल होगा वो तो इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होते जाएगा. अगर वो इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होते जाएगा, इट मींस दैट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज कंटीन्यूअसली चेंज्ड. आउटपुट फ्रीक्वेंसी कंटीन्यूअस हमारी चेंज होते जाएगी. अब इससे क्या फायदा होगा? Output frequency, if the output frequency is continuously changed, so if any unauthorized user trying to interfere our signal, तो वो एक ही frequency को interfere कर पाएगा, वो एक ही frequency को interfere कर पाएगा ना. Suppose any unauthorized user trying to interfere this F1 frequency, लेकिन हमारा जो सिग्नल है वो तो F1 के बाद F4, F3, F7, F5 सभी में शिफ्ट होते जा रहा है. तो जब हमारा सिग्नल सारी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होते जा रहा है, तो जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो हमारी सिग्नल को कैसे इंटरफेयर कर पाएगा? क्योंकि हमारी सिग्नल तो कंटीन्यूअसली शिफ्ट होते जा रहा है. Is it clear to all of you? So this one is the main advantage of spread spectrum. This one is the main advantage of spread spectrum to avoid interference. अच्छा, कोई इस इंटरफेरेंस तीन टर्म होते हैं बेटा. एक क्या होता है इंटरफेरेंस, एक होता है स्पाइंग और हैकिंग, एंड द थर्ड वन इज जैमिंग. तीन टर्म्स ध्यान रखिएगा. One is interference. There are the three different performance parameter in spread spectrum. First one is interference, second one is spying or hacking, and the third one is jamming. क्लियर बात. जैमिंग मतलब आप लोग समझते हैं. जैमिंग मतलब होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर हमारे सिग्नल को बाईपास होने नहीं दे रहा, दैट इज नोन एज जैमिंग. ठीक बात. स्पाइंग और हैकिंग मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर हमारे साइलेंटली हमारे सिग्नल को की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज स्पाइंग और हैकिंग. इंटरफेरेंस मतलब होता है कोई भी अनऑथराइज्ड सिग्नल हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है ताकि वो करेक्ट सिग्नल रिसीवर तक ना पहुंच पाए. दिस वन इज नोन एज इंटरफेरेंस. ये तीनों अलग-अलग पैरामीटर्स आप लोगों को समझ में आए. सो ये जो हमारी क्वालिटी होती है हमारी एफएचएसएस की, है ना, या स्प्रेड स्पेक्ट्रम की, स्प्रेड स्पेक्ट्रम में ये सारी पैरामीटर्स इंप्रूव हो जाते हैं. मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, जैमिंग नहीं कर पाएगा, एज वेल एज वो हमारे सिग्नल को कंटीन्यूअसली हैक नहीं कर पाएगा. क्यों कंटीन्यूअसली हैक नहीं कर पाएगा? बिकॉज़ द सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल कंटीन्यूअसली वेरीज. बात यहां तक सभी को क्लियर? सो दिस वन इज ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम. कुछ बुक्स में इसको फ्रीक्वेंसी होप्ड स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है. होप्ड मतलब आप इसको शिफ्टिंग या स्विचिंग कह सकते हैं, है ना. हमारा जो सिग्नल है वो कंटीन्यूअस एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में स्विच होता जा रहा है. बात यहां तक क्लियर है सभी को? तो जल्दी से वाला ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं इसकी आप लोगों को वेवफॉर्म बताता हूं. या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग सभी लोग. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा.
ठीक, अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी हुप्ड स्पेक्ट्रम में होता क्या है? फ्रीक्वेंसी हुप्ड स्पेक्ट्रम में होता क्या है? इसमें होता एक्चुअली ये है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होते जाती है। It means that in frequency hooked spectrum में change in frequency occurs with respect to time. Clear बात? Change in frequency occurs with respect to time. Clear बात? So I am making a diagram. Here the x-axis represent time and the y-axis represent frequency. Y-axis represent frequency. ठीक? अब मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सपोज हमारा जो सिग्नल है फर्स्ट टाइम इंटरवल में पीएन सीक्वेंस जनरेटर प्रोवाइड करता है 000 कोड। 000 कोड के कारण फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर कौन सी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेगा? F1 फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेगा इन फर्स्ट टाइम इंटरवल, इन फर्स्ट सेकंड। सो आई एम मेकिंग, इट मींस दैट पीएन सीक्वेंस जनरेटर फर्स्ट सेकंड में 000 सीक्वेंस जनरेट किया। इट मींस दैट फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर सिलेक्ट किया F1 फ्रीक्वेंसी, और जो F1 फ्रीक्वेंसी है अब वो हमारी कब ट्रांसमिट होगी? फर्स्ट टाइम इंटरवल में ट्रांसमिट होगी। ठीक, सपोज कोई अनऑथराइज्ड यूजर हमारा F3 फ्रीक्वेंसी पर अगर सिग्नल को ट्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसके पास तो कोई सिग्नल ही नहीं आएगा, क्योंकि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो अभी F1 है फर्स्ट टाइम इंटरवल में। बात सबको समझ में? सपोज इन नेक्स्ट टाइम इंटरवल, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सपोज इन नेक्स्ट टाइम इंटरवल हमारा जो भी सिग्नल है अब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। सभी लोग ध्यान देना, मैं सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना। सपोज इन नेक्स्ट टाइम इंटरवल हमारी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। फर्स्ट टाइम इंटरवल में F1 थी, सेकंड टाइम इंटरवल में वो F3 हो गई। ठीक बात? नाउ इन थर्ड टाइम इंटरवल इट विल बी F5 and in the fourth time interval the frequency is F7। बात सबको समझ में? वैसे ही अगर फिफ्थ टाइम इंटरवल की बात करूं तो फिफ्थ टाइम इंटरवल में सपोज इट विल F2, in sixth time interval suppose it will F4, in seventh time interval suppose it is F6, and in eighth time interval suppose it is F8। बात सबको समझ में? हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है बेटा? हमारी फ्रीक्वेंसी पहले ये वाली थी, फिर उसके बाद ये वाली थी, फिर उसके बाद ये वाली थी, इसके बाद ये वाली थी, फिर ये वाली थी, ये वाली थी, ये वाली थी, ये वाली, है ना? 8 सेकंड में हमारी फ्रीक्वेंसी ने 8 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे जंप किया है, होप किया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा बेटा? इससे ये होगा कि सपोज कोई अनऑथराइज्ड यूजर हमारे सिग्नल को ट्रेस करने की कोशिश करेगा तो इट विल वो हमारे सिग्नल को कैच नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, क्योंकि वो तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे माउंट रहेगा। और इस सपोज अगर हमारा कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर F5 फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को ट्रेस करना चाह रहा है तो वो तो सिर्फ थर्ड सेकंड में ही हमारे सिग्नल को ट्रेस कर पाएगा, उसके पास पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो हमारी बाकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो हमारी चेंज होते जा रही है फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना? कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पे माउंट होके जा रही है, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पे तो जा नहीं रही है। ठीक, तो कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसे हैक नहीं कर पाएगा, इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। बात यहां तक समझ में आई? सो दिस वन इज द फर्स्ट साइकिल। यहां पे सभी लोग ध्यान देना भाई, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना। दिस वन इज द फर्स्ट साइकिल। क्या हुआ ये हमारा हुआ साइकिल नंबर 1। क्या हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा साइकिल नंबर 1। एक साइकिल में हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे 8 टाइम डिफरेंट रिपीट हुई। ठीक, नाउ इट विल रिपीट्स अगेन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इट विल रिपीट्स अगेन। इसका क्या मतलब है? अब इसके बाद जैसे 9th टाइम इंटरवल आएगा, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नाउ इन 9th टाइम इंटरवल में क्या होगा? जो हमारी फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी थी अगेन वो यहाँ पे आ जाएगी, है ना? मतलब ये जो हमारे स्पेक्ट्रम था, ये जो हमारे फ्रीक्वेंसी का मोशन था, इट विल रिपीट्स अगेन।
तो अगर वो फिर से रिपीट करेगा तो 9 टाइम इंटरवल में नाउ द फ्रीक्वेंसी विल अगेन f1 clear बात in 10 time interval the frequency in f3 again clear बात now in 11th time interval the frequency is in f5 again and in 12th time interval the frequency is in f7 again ठीक वैसे ही हमारे आगे और रिपीट होते जाएगी 10 11 12 13 अगेन ऐसे रिपीट होते जाएगी बात यहां तक सभी को क्लियर हो रही है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं सो अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल द फ्रीक्वेंसी इज कंटीन्यूअसली होप्ड अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल द फ्रीक्वेंसी इज कंटीन्यूअसली होप्ड द फ्रीक्वेंसी इज कंटीन्यूअसली जंप द फ्रीक्वेंसी इज कंटीन्यूअसली शिफ्ट सो दैट्स व्हाई एनी unauthorized user can't extract the information of the signal because the frequency is continuously varies. Okay, so this one is the main advantage of frequency hopping spread spectrum. Here the frequency will continuously change. Here the frequency is continuously changed according to different time intervals. Okay, here and the hopped frequency is repeats itself. The hopped frequency is repeats itself after one cycle. एक cycle के बाद जो भी हमारी frequency है वो हमारी continuously repeat होते जाएगी. The frequency is repeats itself. क्लियर बात जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट से लेकर 8 टाइम इंटरवल के बीच में आ रही थी वही फ्रीक्वेंसी फिर से 9 के बाद आएगी वही फिर 17 के बाद फिर से वही फ्रीक्वेंसी रिपीट होगी बात यहां तक सभी को क्लियर है सभी को यहां तक बात समझ में आई सो दिस वन इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी होप्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रम ठीक तो इसका ये वाली जो स्क्रीनशॉट है ये भी आप लोग ले लीजिएगा इसका पहले जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था वो भी आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक ओके थैंक यू सो मच ओके थैंक यू सो मच आज की क्लास में इतना ही रहने देता है अपनी अटेंडेंस आप लोग दे दीजिएगा अटेंडेंस दीजिएगा स्टार्टिंग फ्रॉम रोल नंबर 23 प्रेजेंट है then roll number 20 then roll number 26 then roll number 19 then roll number 28 anyone else और कोई प्रेजेंट नहीं ओके थैंक यू सो मच